performance. I wish it wouldn't have stopped. Yeah, indeed it was. Thanks Miss Nivedita, Miss Meenakshi and Miss Leela for this wonderful performance. मौजूद सामीन, ये बात दुरुस्त नहीं कि औरत समाजी जिंदगी की गाड़ी का एक पहिया है। हकीकत में समाजी जिंदगी की गाड़ी के तमाम पहिए मर्द हैं, जबकि औरत इस गाड़ी का इंजन है और बिना इंजन के पहियों का घूमना मुमकिन नहीं। और ये एक मशहूर कहावत है कि हर जहांगीर की पुष्ट पर किसी नूरजहां का हाथ होता है। तारीख इस बात की गवाह है। ये अलेक्जेंड्रिया की मलिका क्लियोपेट्रा हो या शहनशाह ईरान की जामा मलिका, ये अकबर आजम की मलिका जोधा हो या शहनशाह रिचर्ड की बहन मलिका जैन, ये नेपोलियन की जोसेफिन हो या हिटलर की इवा ब्रान, ये जहांगीर की महरुन्निसा हो या शहनशाह शाहजहां की मलिक मुमताज, ये औरत ही है जिसके इशारों पर नाचते हुए बड़े बड़े फातिहीन ने, बड़े बड़े रेवोल्यूशनरीज ने मुल्कों के नक्शे बदल डाले। औरत के जज्बात को यूं बयान किया जा सकता है कि ये शोले आजमाना जानते हैं, ये शोले आजमाना जानते हैं, सो हम दामन बचाना जानते हैं, और ताल्लुक जो भी रखो सोच लेना, ताल्लुक जो भी रखो सोच लेना कि हम रिश्ता निभाना जानते हैं। The passion, grit, perseverance, tenacity, and go-get-it attitudes of so many inspiring women can only be understood with the next piece of our evening. And it really provides me a great joy to be able to witness these celebrations with you all. Now let us welcome a talent for whom we were waiting for so long. She is going to cast a magical spell upon us with her poetry. She is none other than Archita Ray. आपकी जोरदार तालियों में मिस अर्चिता राय शायरी में काफी महारत रखती हैं। Thank you so much for that wonderful introduction. It also happens to be World Poetry Day today, so that gives me immense joy to present this piece today. I learned my greatest lesson in feminism and women's rights in August 2016. I was there in my university, and some of the students had organized this event, and I really don't remember the theme of it, but it did involve words like women rights, women empowerment. And I come from a very conservative village, so the idea of girls and boys standing together holding pamphlets of women's rights and shouting at the top of their lungs about women's rights was a very liberating as well as an exciting experience, and so I joined in. And while I was on it, one of my professors happened to pass by. He just called me aside to his cabin and said, why are you not in your lab working on your dissertation? And I said, I'll do it, but this seemed like an important topic. To which he said, how is that going to empower the girls in your village? How will shouting slogans empower anyone? You know what empowerment will be? When you will do really well in what you have chosen, the field that you have chosen, and behind you there will be 10 other girls from your village who might be inspired to become a researcher. And you know what empowerment really is? That in our department we are a faculty of 20, of which there are only 3 females, but we don't call each other male scientists and female scientists, we call each other scientists. And I'm just as worried when there is promotion time about competition from my male colleagues as I'm worried about the female colleagues, because they are proven to be equally good. So you know what empowerment is? It is when you just go out there and do your work to the best, and that inspires people. And like we rightly saw from Uma Shankari ma'am's talk, that these are the silent rebellions. You know, you just work, prove your mettle, and that's it. There are thousands of us who will be empowered. So the poetry that I'm presenting today is a tribute to all those who came before us, who inspired us to make this number of researchers reach the percentage that it has reached, the number of lawyers, writers, the fields that we could not even imagine. And today I proudly stand in a country which could not ever imagine that women cricketers will someday get an equal pay as good as the men.
not because they stood somewhere and asked for their rights, but because they proved that they deserved it. So my piece is very simple. It's called Ek Hi Hai, which means that everything is equal if we believe and if we just keep working and accept our privilege that we have equal access to education, and let's just make our mark. So the title is Ek Hi Hai and this is how it is. मेरी कलम तो उनसे मिल जिन्होंने कभी कलम नहीं देखे, मेरी कलम तो उनसे मिल जिन्होंने कभी कलम नहीं देखे, देखे जिन्होंने सपने पर उनके पूरे होने के भरम नहीं देखे। मेरी कलम तो उनसे मिल जो बंधी हुई है चौखट पे, और मेरी कलम तो उनसे मिल जो ढकी हुई है घूंघट में। मेरी कलम तो उनसे मिल जो भरती है रंग मेरे आंगन में, जिनके सिर पर शायद छत नहीं है पर बस रंग है उनके दामन में। मेरी कलम तो उनसे मिल और लिख, लिख कि उनके और मेरे सवाल एक ही हैं, लिख कि हम सबके ख्याल एक ही हैं। When Kiran Bedi became the first IPS officer in females, little did she know that in the years to come there will be hundreds of girls who would wear their uniform and stars in pride in a country that was once fighting against Sati Pratha. So my dear pen, write about Kiran and her tribe for the women who did not shy away. मेरी कलम तो उनसे मिल जो रोज सुबह किसी और का घर सजाती है ताकि उनके बच्चे अपने सपने सजा सके। मेरी कलम तो उनसे मिल जो लिखती है कहानियां गरीबी और भुखमरी की ताकि वो अपना देश बचा सके। मेरी कलम तो मिल अमृता और सरोजनी से कि जब उन्होंने लिखा तो दुनिया उन्हें जान गई। फिर मेरी कलम तो मिल कल्पना और सुनीता से जिनकी उड़ान जमीन से आसमान गई। मेरी कलम तो लिख कहानी अपने उड़ानों की, तो लिख के नाप ले सीमा उनके आसमानों की, क्योंकि तू मान ले कि अब सबकी उड़ान एक ही है, तो मान ले कि सबका आसमान एक ही है। When Rani Lakshmibai chose to be a warrior, little did she know that she had changed the pronoun that we used for a warrior. When Rosalind Franklin and Marie Curie decided to delve into science, they inspired and created a tribe of girls who looked beyond dolls and roses and could dream of revolutions. एक दौर था वो, कुछ और था वो, हर आहट पर नाराज कोई, ना कदमों की आवाज कोई, था अंधेरा घनघोर बड़ा, था सन्नाटों का शोर बड़ा, ना हलचल ना आगाज कोई। थोड़ी बंधन में बंधी हुई, कुछ अपने रंग में रंगी हुई, एक नज्म थी जो गाई नहीं, एक सुबह थी जो आई नहीं। पर फिर किसी का आंचल जब परचम बन के लहराया, किसी के पायल की छमछम में जब शोर क्रांति का आया, तब नाजुक सी एक भोर हुई, तब कहानी कुछ और हुई। सब जागे नींद के पहरों से, सब बोले आज दोपहरों से कि सबका सफर एक ही है, सबका बसर एक ही है। As I stand here, privileged to talk about equality, privileged to write my own destiny, I know I am here because the women before me worked and proved that they could create an equal world. That they braved their families, societies, and at times their own bodies to be in science, in administration, in skies and oceans, on borders and news channels, in courtrooms and jungles. And they did it so it got easier for us. So we shall do it so it gets easier for the generations to come. तो मेरी कलम तो नारे नहीं सवाल लिख, मेरी कलम तो नारे नहीं सवाल लिख, और फिर उन सवालों के जवाब भी खुद ही लिख। लिख कि आजादियां भाषणों से मिली नहीं, लिख कि बेड़ियां बस बातों से खुली नहीं, लिख कि तेरी बिंदी कल का सूरज है, लिख कि तेरे हाथों में तेरा कागज है, लिख कि अब तक ज्यादा लिखा नहीं, लिख वो सब जो अब तक लिखा नहीं, लिख उन सब के लिए जो खुद लिख सकते नहीं, लिख कि बिना लिखे अफसाने बन सकते नहीं, लिख दे कि अब सारा हिसाब एक ही है, लिख दे कि अब सबकी किताब एक ही है, मेरी कलम तो लिख कि सब एक ही है। थैंक यू सो मच।